Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Manoj. Indian benchmark indices break 3-day losing streak. Nifty above 24,850. Sensex gains 218 points. India's first ever rupee denominated line of credit extended to Mauritius. And crude oil futures heads for more than 6% weekly drop. Brent and US WTI both drop 0.4%. घरेलू शेयर बाजार में पिछले 3 सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला थमा। निफ्टी 24,850 के स्तर से ऊपर उठकर हुआ बंद। सेंसेक्स 218 अंक उछला। भारत अपनी मुद्रा रुपए में पहली बार देगा ऋण। मॉरिशस को जल पाइपलाइन परियोजना के लिए दिए जाएंगे 487 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में साप्ताहिक आधार पर 6% से अधिक की गिरावट। ब्रेंट और यूएस डब्ल्यूटीआई दोनों में 0.4% की आई कमी। घरेलू शेयर बाजार में पिछले 3 सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला आज थम गया और निवेशकों की खरीदारी से निफ्टी 24,850 के स्तर से ऊपर उठकर बंद हुआ। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में आज 0.2% यानी 218 अंकों की बढ़ोतरी हुई और ये 81,224 दर्ज हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.4% यानी 104 अंक बढ़कर 24,854 के स्तर पर बंद हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों पर ध्यान दें तो वहां थोड़ा सा मिला जुला रुख था। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में जरा सी वृद्धि देखने को मिली, लेकिन बिकवाली के दबाव में स्मॉल कैप सूचकांक नीचे आकर बंद हुआ। The Indian benchmark indices today broke 3-day losing streak and ended higher, with the Nifty closing above 24,850. The Sensex added 218 points or 0.2% to close at 81,224, and the Nifty ended with a rise of 104 points or 0.4% to settle at 24,854. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, however, small cap indices ended in the red, while mid cap index ended marginally higher. In the Sensex index, 19 out of 30 companies ended in positive territory. Among the top gainers, Axis Bank increased 5.5%, ICICI Bank gained 2.4%, and Tata Motors added 2%. Whereas among laggards, Infosys lost 4.6%, Asian Paints shed 2.2%, and Nestle India fell 1.2%. In sectoral indices at the BSE, only 7 out of 20 sectors logged losses. In the top gainers, BankX rose 1.8%, Metal gained 1.6%, and Financial Services added 1.1%. Whereas in the top laggards, Information Technology slipped 1.7%, Tech declined 1.3%, and FMCG was down by 0.4%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 1,833 companies advanced, shares of 1,928 companies declined, and shares of 106 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर
₹84.07 पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 103.6 पर चल रहा था। Puneet, the Sensex and Nifty, as we just said, today, they snapped the 3-day losing streak. Now, if you look at the past few weeks, this has been happening up and down. If I look at the factors, the geopolitical factors in West Asia, the upcoming US presidential elections, and the Q2 results which are still coming in, do you think these are the major factors that are affecting the markets, or is there something beyond? So, Anubhav, you're right. I mean, the market right now is going through a phase of a lot of uncertainty on economic front as well as on the political front. So clearly there are many factors at play. Domestically, if you see, it's been quite a challenging month because foreign investors have been on a big selling spree. We have had almost 50,000 crore worth of selling by foreign investors in the country this month. Only saving grace was that the domestic investors were very, very strong, and we saw almost similar buying by domestic institutions, but that tussle is on between the sellers and buyers. At the same time, we had challenges on global stage where China was announcing stimulus and trying to revive their economy and their markets. We've seen, like you mentioned, the geopolitical concerns, and amid all that, the flow of funds in the global market. So all that put together, the month of October has been pretty challenging for the markets. We have seen some retracement from top. At the beginning of this month, the Nifty index was above 26,000 levels. We have seen approximately 5% fall from that level. So that is, I think, within the ambit of a healthy correction, I would say. We don't know what's happening in the next few weeks. Of course, we had a shock because one of the largest IPOs in the country, which was Hyundai Motors, that did not get the kind of response from retail investors that everybody was expecting. So all these things are in the mix. I think the markets are going through this challenging phase right now. You mentioned the Hyundai IPO, so that brings me to the auto sector, because the auto sector, as we have been seeing, is not performing that well. I mean, we have seen results coming in from a few auto companies, the Q2 results. So what does it say? Because the festive season is here. Normally, auto sales, although it's, of course, whatever happens now will be reflected in the Q3 results. But what's happening with the auto sector? So, Anubhav, the macro numbers we are getting from, and these are advanced numbers. We don't know yet, those final numbers are not in, there's just estimates. They're not pointing towards a continuing, speedy growth in the industry sales or in economy. We got a commentary from Bajaj Auto yesterday, which pointed towards a slowdown in demand for two-wheelers. In response, the stock had fallen very sharply, 10-12%. So clearly, automobiles sector is right now hinting at a somewhat slow growth in economy. We don't know whether this will sustain, this will persist, we don't know. But early indicators are that the economic growth that we are looking at, 7% plus in the past few months, that may come down a little bit. We might be heading towards 6.5 to 7% GDP growth. That is what the numbers are suggesting. We are waiting for Q2 numbers from companies, which will start coming in from next week in a more frequent manner. But I think the concern right now, the market is looking for some indication towards future growth from those numbers. पुनीत जी, बाजार के रंग को भांपना बड़ा ही कठिन होता है और उसके मूड को समझना वो भी बहुत कठिन है। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए जो आपने अभी बताया ऑटो सेक्टर के लिए या पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, वहीं यदि हम मॉनसून के प्रसार को देखें तो मॉनसून के प्रसार के साथ यदि जोड़ के देखें तो बाजार की रौनक बढ़ती नजर आ रही या जो आशंकाएं हैं वही हावी रहेंगी? मनोज जी, देखिए, नॉर्मली जब भी मॉनसून अच्छा होता था भारत में, क्योंकि हमारी देखिए फिर भी एग्रेरियन इकोनॉमी है, 65% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी डेली अर्निंग्स के लिए उस पर डिपेंड करती है। तो मॉनसून का जो सीधा सीधा ताल्लुक इकोनॉमी से और उससे स्टॉक मार्केट से हमारा रहता था, और अच्छा मॉनसून हुआ, हमने देखा उस दौरान स्टॉक मार्केट में भी काफी बड़ी तेजी आई। अगर आप जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना देखें तो मार्केट में काफी बड़ी तेजी थी। लेकिन अब मॉनसून से बड़ा एक सवाल हमारे सामने है, वो जो कंटिन्यूइंग ग्रोथ है। और देखिए, ये हम मानते हैं कि 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, लेकिन ये भी सच है कि सिर्फ 20% हमारा जीडीपी जो है वो एग्रीकल्चर से आता है। तो ओवरऑल अगर जीडीपी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो उसमें एग्रीकल्चर का उतना बड़ा
इम्पैक्ट नहीं आता। तो कंजम्पशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्बन कंजम्पशन जो हमने अभी बात करी, ऑटोमोबाइल जैसे, या बड़े जो इस तरह के खर्चे होते हैं, घर खरीदना है या इस तरह की इकोनॉमिक कंजम्पशन है, स्टील है, सीमेंट है। तो मैं ये कहूंगा कि मॉनसून का होना एक अच्छी एक चीज है, इंडिकेशन है इकोनॉमी के लिए, लेकिन और दूसरे फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हाँ, अगला सवाल ये बनता है कि जो मतलब कह लें कि मौसम है वो त्योहारों का मौसम शुरू हो गया और वहां थोड़ी सी गर्मी की बजाय सर्दी नजर आ रही है, यानी पटाखे फूटने की जगह वो सीले सीले नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहां से डिमांड आपको नजर आ रहा है कि डिमांड कहीं दिख रहा है या नहीं? मनोज जी देखिए, थोड़ा चैलेंज है। मैं आपको सच बताऊंगा कि अब जब शुरुआती दौर में पेंडेमिक शुरू हुआ और थोड़ा इकोनॉमी में काफी बड़ी गिरावट आई, लेकिन वहां से 2021 से अगर हम देखें तो इकोनॉमी में बहुत रफ्तार पकड़ी और उम्मीद से बहुत ज्यादा तेजी से इकोनॉमी बढ़ी, कंजम्पशन भी बढ़ी, एक्सपेंडिचर बढ़ा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा यहां पर सांस अगर लेती है इकोनॉमी, थोड़ा मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इकोनॉमी 7% ग्रोथ से हम घटकर 5% ग्रोथ पे आ जाएंगे, लेकिन अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा इकोनॉमी में ठंडक आती है तो वो कोई बुरा नहीं है। एक तो देखिए, उससे इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना होगा। आज भी आरबीआई गवर्नर ने ये बात कही है कि यदि हम जल्दबाजी में अगर इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, और क्योंकि ऑलरेडी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी है, हेल्दी ग्रोथ है, अगर हम जल्दबाजी में उस ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे इंटरेस्ट रेट कट करके, तो उससे नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हम एक सही रास्ते पर हैं। पर्टिकुलरली अगर आप देखें जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है सरकार के, वो जिस रास्ते में चल रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखें तो बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ की आशा करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ठीक है, ये जो दौर है ये थोड़ा सा उम्मीद से थोड़ा कम है, पर ये लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है फायदा रहता है। Since you've mentioned RBI governor's, his comments today about inflation and about, the cutting the interest rates, I want to ask you one thing, that right now, if we see, there are some central banks across the world, including the US Fed, including the European Central Bank, they've already started their rate cut cycles. But as the governor today said, that it's still too premature and risky to start RBI's rate cutting cycle. Do you think the markets are also reacting to that, because there is a difference? So markets, of course, Anubhav, would be very happy if interest rates come down, because usually when interest rates are lower, the markets tend to go higher. But I think in India the situation is somewhat different right now, because we also have the dynamics between growth and inflation. See, we want higher growth, but we don't want high inflation, because we have a large population of part of the population which has fixed income. So we don't want higher inflation. If inflation goes higher, the fixed income earners, they start suffering. So clearly, I think there is a trade-off between economic growth and inflation here, and RBI is I think very rightly siding with caution in controlling inflation. So I think we are on the right path, really. Again. And so taking off from what the RBI governor said today, and he because he's also said that inflation is expected to remain high even in October, with ease expected from November onwards. So does that somewhere, hint at the factor that, it's not going to happen in December, yes, which he's already said? I think absolutely. I think RBI so governor has next year now, early 25. And not only that, I think RBI governor is smartly dampening the expectations also. Right. He's saying don't expect interest rate cuts, and no, we don't. He doesn't want markets to get excited about expected liquidity and lower interest rates. Yeah. So I think it's a very prudent step that he's taken. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस महीने की 22 तारीख से रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। कजान में होने वाले शिखर सम्मेलन का विषय वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। यह सम्मेलन प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। ब्रिक्स देशों द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति का आकलन करने और भविष्य में सहयोग के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने का अवसर भी प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिक्स सदस्य देशों के अपने समकक्षों और आमंत्रित नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। क्या सब उम्मीदें हम रख सकते हैं इस सम्मेलन से, शिखर सम्मेलन से ब्रिक्स के? मनोज जी देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ब्रिक्स जो टर्म जब कॉइन हुआ था, ये गोल्डमैन सैक्स ने
जो कि शेयर मार्केट के दिग्गज खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, ये उन्होंने टर्म कॉइन किया था। और उन्होंने ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को देखते हुए और इन शेयर मार्केट की बेहतर परफॉर्मेंस को देखते हुए ये टर्म कॉइन की थी। और ये टर्म एक वहां से स्टॉक मार्केट से चल करके एक विश्व के स्टेज पर एक उभरी है और ये एक प्रकार के देश साथ आए हैं। मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी। और जो देखिए, हम चाहे माने या ना माने, जो इसको आप ग्लोबल साउथ कहते हैं या डेवलपिंग इकोनॉमीज कह सकते हैं, अब ये एक नया एक फोर्स बन करके इकोनॉमी में, एक वर्ल्ड इकोनॉमी में उभर रही है। हमारी नेगोशिएटिंग पावर बढ़ रही है। पहले ये जो हम देखते थे एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड या बाइपोलर वर्ल्ड की बात करते थे। मुझे लगता है कि एक नया बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट है। और हालांकि आपको याद होगा कि अभी हाल में काफी कोशिशें की जा रही हैं कि इस ब्रिक्स को बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल, संख्या बढ़ाने की नए देश। Earlier this year, in fact, in January itself, new members have been added to this group: Ethiopia, Egypt, Iran, Saudi Arabia, and the UAE. So that was what I was coming to, Puneet, that it's going to be the first meeting of the expanded BRICS. So that also assumes, significance. And it also signifies the importance of BRICS. So new members want to join into the group. So they realize that this is the new power center, so to say, on the global stage. It's very good. I think and India being a very significant member of BRICS. Yeah. So we have China, of course, which is very large, and we have Russia and India. So India, in this new grouping, India will be a major player. It's not as if we'll be just a small member of the group. Right. We are really significant members of this group. Moving on, India has extended a new line of credit of 487.6 crore rupees to the Mauritius government for financing a water pipeline replacement project. This is the first ever rupee-denominated line of credit to have been extended by India for project financing to any country under the Indian Development and Economic Assistance Scheme, or IDEAS. The project envisages replacement of approximately 100 kilometers of obsolete water pipes in Mauritius. The Government of India supported line of credit will be financed by the State Bank of India at concessional terms. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar made the formal offer to his Mauritian counterpart Manish Gobind, which has now been accepted by the government of Mauritius. Our correspondent adds that this is yet another reflection of India's long-standing commitment to overall socio-economic development of the countries in the global south. India's development projects continue to be driven by the aspirations and needs of its partner countries. Puneet, how important and how significant is this development? Because it's the first time that India is going to extend a line of credit in its own currency, rupee, to any country. So, Anubhav, how important this is, you can measure from the fact that this gives us huge leverage vis-a-vis international trade. The rupee term loan they are giving to Mauritius, of course, they can use that currency only to buy goods from Indian companies. Yes. They can't pay rupees to a European country, So we are also ensuring. So this is smart economics and this is smart politics. So while we are ensuring business for our companies, the money we are giving, 500 crores, will actually be spent on buying goods from India. Also, Mauritius government, of course, gets a project and gets develop its own infrastructure, which is very good. It gives us further leverage in that country. Yes. In fact, you remember that China has been doing it for quite some time, and particularly with countries in Africa, which had no US dollars to purchase goods. So China was extending yuan loans, and we know it did bring them a lot of leverage in Africa. So I think India, of course, is also following it. Also, usually, Anubhav, whenever we never used to do it earlier because we were always in need of US dollars. We were always wanting companies to export goods against dollars. Now that we are comfortable, we have $700 billion of foreign exchange reserves. So we can really afford to do it now. We could not do it earlier, even if we wanted to. यहाँ पर बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे कि मुद्राओं के बाजार पर हालांकि एक छोटी शुरुआत है, छोटे देश के साथ शुरुआत है, कोई फर्क पड़ेगा रुपए की स्थिति को लेकर? देखिए, एक्सचेंज रेट को लेकर तो नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन एक लॉन्ग टर्म एक साख जो बनने की बात है, करेंसी की एक साख होती है कि आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उससे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो गिने चुने देश हैं दुनिया में, 6 या 7 ऐसे देश हैं जिनकी करेंसी का कोई मूल्य होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। और मुझे लगता है कि भारत भी कोशिश कर रहा है कि अपनी उसमें एक बहुत डिफिकल्ट मार्केट है वो, उसमें अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Let's move on to the next story. As part of National Green Hydrogen Mission, the Union government has sanctioned 3 pilot projects for use of hydrogen in steel production. The objectives of the scheme are to identify advanced technologies for utilizing green hydrogen
in steel making through pilot projects. These pilot projects can demonstrate safe and secure operations of green hydrogen-based steel making processes, validating technical feasibility and performance, evaluating their economic viability, thereby leading to low carbon iron and steel production. Accordingly, the proposals were invited for 3 components: pilot project to produce DRI using 100% hydrogen using vertical shaft, use of hydrogen in blast furnace to reduce coal or coke consumption, and injection of hydrogen in vertical shaft-based DRI making unit. The National Green Hydrogen Mission was launched on 4th January 2023 with an outlay of over 19,700 crore rupees up to year 2930. It will contribute to India's goal to become Atmanirbhar through clean energy and serve as an inspiration for the global clean energy transition. यहाँ पर बहुत संक्षेप में फिर जो हाइड्रोजन का भविष्य है और भारत इस क्षेत्र में उभरता हुआ खिलाड़ी बनने की दिशा में कहां तक पहुंचे हैं हम? देखिए, अभी ये एक जैसे इसमें प्रोजेक्ट में हम स्टोरी में हमने सुना कि ये पायलट प्रोजेक्ट है, ये एक डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है, लेकिन भारत जो हमारे प्लान्स है अगर उसको हम देखें, जो सरकार का भी ने PLI काफी बड़ा एक अनाउंस किया है हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, वो हाइड्रोजन के जो अब काफी हम आगे बढ़ रहे हैं और शायद भारत आने वाले 10 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर कंट्री उभर कर आ सकता है। और हमारे पास टेक्निकल क्षमता भी है और हमारे पास कंजम्पशन भी है उसके लिए। और स्टील मेकिंग में क्योंकि काफी ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस होता था, आपको मालूम होगा कि जब कोयला इस्तेमाल करते हैं तो कोयले की रिप्लेसमेंट हम ग्रीन हाइड्रोजन से कर रहे हैं ऑक्सीडेशन के लिए, तो वो एक बहुत ही एक अच्छा कदम है। तो स्टील मेकिंग के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी, और मुझे लगता है भारत के जो एम्बिशन है टू बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन द वर्ल्ड, वो मुझे लगता है कि इससे साकार होने की दिशा में हम बढ़ेंगे। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें एक बार फिर से विश्व बाजार की ओर। सबसे पहले हम नजर डालेंगे एशियाई शेयर बाजार पर, जहां 5 में से 4 प्रमुख एशिया के बाजार लाभ में रहे हैं। निवेशकों की खरीदारी से हांगकांग का हेंगसेंग सूचकांक 3.4% लाभ के साथ बंद हुआ। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 2.8% की वृद्धि हुई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.1% ऊपर आ गया, जबकि सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.4% की वृद्धि हुई। उधर बिकवाली के दबाव में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.6% नीचे आ गया। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो वहां मिला जुला रुख समाचार तैयार किए जाने तक बना हुआ था। लंदन का FTSE 100 0.3% नीचे चल रहा था। फ्रांस के CAC 40 में 0.4% की तेजी थी। जर्मनी का डेक्स भी 0.1% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। Let's move on to the US market. The Dow Jones Industrial Average advanced on Thursday to its 4th record close in the last 5 sessions, as stronger than expected monthly retail sales indicated a robust US consumer, and Taiwan semiconductor manufacturing companies' upbeat forecast buoyed chip makers' stocks. The other main Wall Street benchmarks were largely unchanged, as the S&P 500 dipped to a fractional loss and the Nasdaq Composite eked out a tiny win. The S&P 500 lost 0.02%, while the Nasdaq Composite climbed 0.04%, and the Dow Jones Industrial Average rose 0.37%. Puneet, your comment on the way the Dow Jones Industrial, Average, the indices, like we said, this index closed on it had a 4th record close in the last 5 sessions. So, Anubha, I think the performance of US markets in last 1 month after the Fed cut interest rates for the first time and with the largest 50 basis points, I think it's been remarkable, and they've continued to rise. Although most of this is now led by real economy stocks, and Nasdaq has not been doing too well. But overall, if you see the liquidity in the US markets, and on top of it, we had robust economic growth numbers and we had good employment numbers. So I think it's right now it's kind of Goldilocks situation for US, but we should not be sanguine about it, because next month we have US elections. Yes. I think which will really set this whole apple cart afresh in a sense. I'm not saying topsy-turvy, but it will definitely affect market sentiment significantly next month. So we feel good about it, but I think we need to be cautious. पुनीत जी, यदि हम एशिया की ओर लौटें और चीन की आर्थिक स्थिति को समझना चाहें तो वहां से क्या खबरें आ रही हैं, किस दिशा में चीन की अर्थव्यवस्था जा रही है? तो मनोज जी, पिछले शनिवार को चीन ने एक बहुत बड़ा स्टिमुलस अपनी इकोनॉमी के लिए अनाउंस किया था, और प्रॉपर्टी क्षेत्र की जो कि काफी ज्यादा वहां पर प्रॉब्लम चल रही थी। हालांकि उन्होंने उसका जो स्टिमुलस है उसका नंबर नहीं दिया, लेकिन चीन ने पहली बार ये कहा कि हम बहुत बड़े पैमाने पर बाजार से पैसा उधार लेंगे और अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे। एक चीन के लिए ये बहुत
बड़ी स्टेटमेंट है। तो वो काफी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। उसका असर हम भी देखें, हमने बाजार अगर आप देखें तो वहां बढ़े भी हैं और वहां उम्मीद बंधी है कि वहां बढ़ेगा। लेकिन जो आज नंबर्स आए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के चाइना में, वो करीब 3.5%, 4% के करीब आप कह सकते हैं, वो ग्रोथ वहां पर नंबर्स आए हैं, जो यानी इतनी बड़ी एफर्ट के बाद भी वहां पर नंबर्स अभी नहीं सुधरे हैं। पर ऐसी उम्मीद है कि ये स्टिमुलस अब जो ला रही है सरकार, चाइना में रिवाइवल हो सकता है। Puneet, when this stimulus was announced and, we immediately saw, or rather some analysts believe that, this outflow of foreign funds from India were going to go now to China, and because of the stimulus announced, because for them it's going to be a more attractive market. But overall, if you look at it, investors still believe, analysts still believe that India is a much more, continuous and much more lasting economy vis-a-vis the Chinese economy. So Anubhav, when we look at investors, there are many types of investors. So there are some long-term investors in India. I think they're going to stay here. They look at India as a long-term story. There is always a category of investors which is short-term hedge fund players who are just traders. I think it is that kind of money which has gone from India to China, and just to play on the valuation, because Indian PE multiples are around 30, yes. Chinese PE multiples are around 10, so it made sense for them to make short-term gains in the market. That is volatile money. It will go to China, it will probably come back to India anytime soon. So I don't really pay much attention to that. I think the long-term investors in India, they continue to be very, very positive and optimistic. Let's move to commodities. Oil futures inched lower and were headed for more than a 6% weekly drop on Friday on concerns about demand from China's slowing economy and easing supply risk from the Middle East conflict. Brent crude futures inched 0.4% lower to $74.12 per barrel, while the US West Texas Intermediate crude was also down 0.4% at $70.41 a barrel when reports last came in. Oil futures heading for a 6% weekly drop. What would you say? And we were just talking about the Chinese stimulus package, and here it is because on concerns for demands from China's slowing economy. So I think the oil market, everybody thought that once the Middle East conflict was there, oil will shoot through the roof. But I think the slowdown in China was so significant, and China, of course, is the world's largest consumer of oil. So that, I think, has really punctured the bullish sentiment in oil. Good for us, because the prices continue to be quite comfortable for us. Yes. I think going forward, with all this commotion in geopolitical situation and all these concerns, if oil has been stable so far, I feel it going forward, it will remain in the comfort zone, and I don't see it really going anywhere majorly soon. आइए चलें सराफा बाजार। सबसे पहले सोने की कीमतों में आज समाचार तैयार किए जाने तक मजबूती देखी जा रही थी। 24 कैरेट सोना समाचार तैयार किए जाने तक 77,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, जबकि 999 फाइन चांदी 1,370 रुपए बढ़कर 93,320 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में देखें तो वहां भी सोने के दाम मजबूत थे। दिसंबर अनुबंध वाले सोने का मूल्य 0.65% बढ़त के साथ 77,604 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। दिसंबर आपूर्ति वाली चांदी भी 1.5% बढ़त के साथ 93,155 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मनोज जी। And before we close, a reminder of the headlines. Indian benchmark indices break 3-day losing streak. Nifty above 24,850. Sensex gains 218 points. India's first ever rupee denominated line of credit extended to Mauritius. And crude oil futures heads for more than 6% weekly drop. Brent and US WTI both dropped 0.4%. घरेलू शेयर बाजार में 3 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला थमा। निफ्टी 24,850 के स्तर से ऊपर उठकर हुआ बंद। सेंसेक्स 218 अंक ऊपर आया। भारत पहली बार रुपए आधारित ऋण उपलब्ध कराएगा। मॉरिशस को मिलेगा पहला ऋण और कच्चे तेल के दाम घटे। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम विदा लेना चाहेंगे। And do remember to join us tomorrow at the same time to your favorite economic, business and stock market news program from Akashvani. Till then, from the entire team of Market Mantra, Namaskar.
Buzz it.